This is of dividing a bigger network into smaller networks. Mm-hmm. The benefit being the traffic congestion is avoided. That is first thing. Second benefit is Fault finding. fault finding is easier, troubleshooting is easier. Mm-hmm. Third benefit is since the networks have become each subnet is an independent network, and if the networks are independent, how do you connect them? What do you need to connect subnets? If they are or networks which are how which devices used to connect networks? You have done Router. one packet Route tracer exercise, no? For routing, you did that, right? exercise. Yeah, I showed you how, that packet tracer, no? Exercise for Yes. connecting networks, right? Hmm. Mm-hmm. I'm just asking, I'm just trying to recollect. You have done that Yeah. exercise, no? Packet tracer exercise with me. No, not exercise. You just showed me how, I mean, what will be the default subnet mask for classes. Acha, on the packet tracer. Okay, okay. Yes, we did not do any exercise, I remember. All right, no problem. Okay, so if you want to connect the different networks, then you need a device called as router. Router, yeah. So what is a router? Router is a device which connects one network to another network. Hmm. All right. Router is Yes. a device which connects one network to other network. Yeah. That you have to understand. Hmm. Hmm. So these subnets also, once you break the bigger network into smaller networks, then what happens is each subnet will become a separate network. Each subnet will become a separate network. They will not talk to each other. Hmm. If you want them to communicate, then you have to connect with the help of router. Yeah. Getting? Yes. I'm just wondering, morning time, are you free generally 10:30 India time? Now you have recovered from the illness, right? So, Yes. 10:30 means 8 here. I don't mind. I will wake up. you'll wake up. No? Yes, yes. Yeah, because some extra classes I'm going to take in the morning with that other boy, Tehsin, no? Tehsin. Mm-hmm. Mm-hmm. उसका भी सेम टॉपिक चल रहा है तो दोनों का साथ में हो जाएगा ना इसलिए Acha, just let me know which days so that I can plan accordingly. ओके ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम टेकिंग फॉर हिम but it's manageable for you, right? Between Yes, you are yes. not well, so hmm? No, that's fine. I can wake up. Unless until some activity, I'll let you know. Any Yeah. plans? Group class, though you are attending, that's not an issue. But this extra Yeah. classes which I'm taking, I want you to attend with him. Like, hmm? Fine, fine. I don't know. Yeah. So what I was saying is that when you do subnetting, then each subnet is a separate network, Mm-hmm. and to connect them, we require a router in between. So Yes. router is a device which connects one subnet to another subnet. Okay. Yeah. And all the data will go through router, and in the router, then we can put some rules. Mm. We can put some rules for traffic management. Getting? Yes. So some rules we can put for traffic management in the router. Mm-hmm. So so for the sake of security also we need subnetting. So like in an organization, you will do subnetting. Each subnet will be like one department, right? Mm-hmm. Now if you want to send data from one department to other department, it will go through router. And in the router we can put the rules, like which department is allowed to communicate, right? Correct. To another. Getting my point. So in Azure Yes. also we'll be doing this. We'll have uh, a router uh, where we can control the traffic. Okay, Yeah. clear now? Yes, So this is Manoj. the third benefit. So first benefit was
traffic congestion is avoided. Mm-hmm. Second benefit is Fault finding, fault finding troubleshooting. is easier. Third benefit Yeah. is security, right? Yes. 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 And there is one more benefit, like class 3, how many hosts you can attach? Class 3. 254. In class C, we can attach 254 hosts, right? Yeah. On this 254 hosts, also like in our office, we have 50 computers. Okay. Mm-hmm. On this 50 computers, if I use class C, 50 IP addresses will be used, but still 204 IP addresses will be wasted, Correct. isn't it? Yes. Yes. Two So zero 202, right? 204, no, 254, right? So I use 50 addresses, so 204 addresses are wasted, right? Yes. A small question. Anyways, we are doing -2, no? So we are not using first and last, right? Otherwise, it's Happy? 256 addresses. माइनस टू करके टू Oh. फिफ्टी फोर हो गया. Okay. 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 Sorry. Sorry. Got the point. Okay. Okay. What will happen? You will waste those addresses, right? Mm-hmm. Right. So those addresses get wasted. Mm. So what will happen? So, but if you do subnetting, suppose we have two branch office, one in Kondwa area and one in Korega Park area. So we can divide it into two parts. So if it is Mm. 256 IP addresses, so divide by 2 means 128 each, right? Right. So it is better utilization or not? Yes. It's Yeah, so that is another benefit of subnetting, that better utilization of IP addresses. yeah, like to save the IP addresses, basically. Yeah. Yes, Yeah. yes. To save the IP addresses. Clear now? Yes. So that's why we want to do subnetting. So now I'll just show you the screen and you can take a snip of it. Mm. Yeah, so can you take a snip of this? Can you just scroll down so I can take the full snap? No, I've taught you this much now, right? Okay. 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 You mean till the fourth point? Okay. Yes. Fine. Yeah. 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 Okay. Done. Now, this is what you have to understand next. Structure of IP address before subnetting. I have told you that IP address has got two parts. What are the two parts? Network part Network and pass, host host part. part. Yeah. Network part is like what? The permanent part. Building number. Network part is like building number. Oh. Okay. Okay. And host part is like what? Office number. Correct. So network part is like building number, host part is like office number, correct? Mm-hmm. Right? Yes. But now with subnetting, the structure will change a bit. Mm. With subnetting, the network part is like building number fine, but now we have floors. We have subnet part also, floor number and then office number. Mm-hmm. So each subnet is like a floor, a new floor. Getting? Yeah. So same IP address will have three parts nowadays. Now, before it was having only two parts, right? Mm. Now it will have three parts, network part, subnet part, and host part, Okay. right? Yeah. Yeah, so network like part like building number, subnet part like floor number, and host part like office number, like that. Mm. Okay. Yeah. Now, and each floor is like a subnet. Okay. Each floor is like a new subnet. Okay. Mm. A new network, you can say. Mm. Now tell me, for a given floor, for a given Mm. floor, Mm.
Which part of the address is fixed? The building number, floor number, office number, what is fixed for a particular floor? For a particular floor, what is fixed? The building number, the floor number, office number. Out of the three, what are things fixed for a given floor? Getting the Uh, analogy or not? no, question I did not understand. My question is, Hmm. we have building number, we have floor number and office number, right? For the Okay. address. Mm-hmm. For a given floor, for a particular floor, so Mm-hmm. all the offices will have what thing constant, fixed, Floor. and And we the have building three number. things. We have building Yeah. number, floor number, and office number. For a given floor, what will you fixed? Correct, you're right. Uh, You're correct. Tell me. Yeah, the floor number will be same, and And building number will be same. correct. These two parts will be same. Hmm. Correct. Yeah. Yeah. So when you do subnetting for a given subnet, these two parts will be same. And host part Uh, will change. Okay. yeah. Yeah. Hmm. Clear now? Yes. So we have this. What do you say? The fixed part has increased. Before it was only this much, right? Only building number. Now you have building number and floor number. Clear? Correct. Yeah. Yeah. Got my point Y- now? Yes. Pakka pakka. Yes. Yes. Paka paka. Okay, take a snip now. Take a snip. Yeah. Okay. Then Yes. okay. Now uh, now I'll ask you a simple question. Hmm? Hmm. Hmm. Let me see if you can answer that. Hmm. Let's say for the time being, imagine that your IP address is not 32-bit binary. Instead, it's a 32-bit decimal. Okay. Okay. And let's say I have to make the 50 floors. How many floors? 50 floors. Okay. Now to represent number 50, how many digits are required Two. to represent number 50? 50. How many digits are required? Two digits. Very good. Two digits, correct? Hmm. So if I take a class B IP address, so 16 digits for the building number, right? Two digits for the floor number, right? Hmm. So how many remaining, how many digits remain for the office number then? 34. How 30? Total length is 32, right? No, class B, the 16 digit for building number, 16 digit for the floor number. But no, sorry, 16 digit for the building number and 16 digit for the office number, right? Hmm. Mm-hmm. For class B. But now we have floor number also, right? Hmm. So 16 digit building number, 2 digit floor number, right? So how many digits remain now for the office number? If you don't have floor, then 16 digit for the network part, 16 digit for the host part, or you can say 16 digit for the building number, 16 digit for the office number. But if you do Yeah. subnetting,
Hmm. Then what? 16 digit. Here we o- are using for the building number, 2 digit Okay. for the floor number. How much remains here? No, the 16 for network part I understood, but 2 for floor. This concept I'm not understanding. 15 है, number 50. Maximum हाँ. 50 floors होंगे ना? Okay. I said that you imagine that it is a decimal IP address. Okay. तो आपका जो नेम प्लेट बाहर है, पहले कैसा था? सबनेटिंग नहीं किया तो 16 डिजिट, 16 डिजिट वॉज फॉर बिल्डिंग नंबर, 16 डिजिट वॉज फॉर ऑफिस नंबर. Right. Right. Okay. नाउ वी हैव फ्लोर नंबर्स ऑल्सो फॉर द सेम नेम प्लेट. नेम प्लेट का साइज उतना ही है, 32 डिजिट का ही है. हाँ. तो उसमें 16 डिजिट अपने बिल्डिंग नंबर के लिए यूज किया, 2 डिजिट हम्म. अपने फ्लोर के लिए. फ्लोर के लिए यूज किया. तो बाकी कितना हम्म. बचा? 12. ट्वेल्व कैसे? हाँ, sorry, 14, 14. 14 बचा, राइट? Yeah. 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 तो ये होस्ट पार्ट जो होता है उसमें से अपने को माइनस करना पड़ता है, राइट? तो Mm-hmm. 16 हमने इसके लिए यूज किया, दो इसके लिए यूज किया, बचा 14. तो ये अपने ऑफिस नंबर के लिए दे दिए, राइट? Mm-hmm. गॉट इट? गॉट द कंसेप्ट नाउ? Yes. Yes. तो फ्लोर So नंबर के लिए, basically, sorry. या, So basically हम लोग होस्ट पार्ट में से कम कर रहे हैं यस, फॉर करेक्ट. फ्लोर. गॉट इट, करेक्ट. हम्म. यू हैव हिट द bullseye, करेक्ट, राइट, वेरी करेक्ट. फ्रॉम द होस्ट पार्ट यू आर माइनसिंग इट. दैट्स परफेक्ट, एकदम करेक्ट. हम्म. ओके, गेटिंग? या. यस. यस. 2 डिजिट क्यों लिया हमने फ्लोर नंबर के लिए? व्हाई डिड वी टुक टेक 2 डिजिट फॉर द फ्लोर नंबर? यस, कैन यू हियर मी? यस. यस. आई एम थिंकिंग मनोज. कितने फ्लोर चाहिए हमको टोटल? बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है? 50 फ्लोर्स है. या. तो मैक्सिमम फ्लोर्स इज 50, राइट? तो हम्म. 50 का आंकड़ा, लास्ट फ्लोर नंबर 50 रहेगा, तो उसको कितना डिजिट लगेगा नेम प्लेट में 50 का आंकड़ा या. रिप्रेजेंट करने के लिए? दो. दो लगेंगे. करेक्ट. दैट्स व्हाई वी टुक इट एज 2. हाँ. 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 करेक्ट. ओके. ओके. या. गॉट इट नाउ? पक्का? यस. यस. हाँ. सो दिस इज डिजाइन फॉर 50 फ्लोर्स, बट ये कितने फ्लोर्स तक जा सकता है? वी हैव 2 डिजिट्स, राइट? इट कैन गो अप टू हाउ मेनी फ्लोर्स? फिर 2 डिजिट का मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? फ्लोर नंबर के लिए 2 डिजिट रखा है हमने, राइट? कितने फ्लोर्स तक जा सकता है 2 डिजिट? this can go till with the maximum host, right? हाँ, नहीं, मैक्सिमम फ्लोर्स कितने बन सकते हैं? अगर 2 डिजिट हमने रिजर्व किया तो कितना फ्लोर्स काउंट हो सकता है 2 डिजिट से? 99. वेरी गुड, 99. हमारे बिल्डिंग में भले ही आज 50 फ्लोर्स है, बट इट कैन गो अप टू 99 फ्लोर्स. गेटिंग? Right. 99 फ्लोर्स तक जा सकता है. क्लियर? Mm-hmm. सो दैट इज द होल आइडिया. तो अगर ये समझ में आ गया तो सबनेटिंग यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है. ये आपने डेसिमल में किया, वही चीज बाइनरी में करना है. तो Okay. सपोजिंग हमको 500 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाना है, तो Hmm. कितने डिजिट्स लगेंगे इसमें फ्लोर के लिए? 3 digits required. 3 डिजिट्स लगेंगे, राइट? Hmm. बट उससे कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? 999. 999 तक जा सकता है. क्लियर? Yes. So this is the issue here. Subnetting is there only. You have to ask this question: how many subnets are required for that business? Accordingly, you have to borrow
some bits from the host part. Clear? Mm-hmm. Is the concept clear? Yes. Okay. Yes, Manoj. Yeah, good, good. So take a snip of this, and that's why Mm, ये बिट्स में अगर देखेंगे तो ऐसा होगा वो. पहले इतना ले लो. So just reduce it a bit so that you can take it. mm. So just see here. Lastly, you know that 8 bits is for the network part, right? Yes. Now, how many bits? A bits may, not digits. How many bits to take from the for subnet depends on the business requirement, right? You have Mm-hmm. 50 subnets or 500 subnets or 1000 subnets. So you take X bits. So host part may it will be 24 minus X. इतना बच जाएगा, correct? Yes. Getting? Yes, yes. Class B में 16 है. तो X is the subnet part bits, right? Mm-hmm. अगर X bits ले तो 16 minus X host के लिए बच जाएंगे, right? वैसे Mm, क्लास सी yeah. में 24 bits for the network part, X bits for the subnet part, so 8 minus X for the host part. So from the host we have to borrow some bits to represent the Mm, subnet. Clear now? yes, yes. Now take a snip of this. Okay. Clear? Yes. So actually वो जो भी exercise दिए ना वो पूरे करने बहुत जरूरी है. तो even though you have understood it, but still you have to you know make sure exercise कर करके और पक्का होता है ना वो. Yeah. उसको complete करना exercise. Yeah, sure, sure. Okay, so once you have understood this, now we come to the some examples here, right? Mm. Look at this example. Class minute. The company decides to use the Class B network with the following network address and mask. ये network address है और mask है उसका, right? Mm, And they want 50 subnets now. mm. You know, Class B में कितने है total? Class B में कितने total? अगर हम subnetting नहीं करते तो कितने host आते हैं Class B में? Uh, Class B में क्या maximum host कितने आते हैं? 65,000. 65,000. But the Yeah. company says no, we want to divide into 50 subnets, right? Mm-hmm. And each subnet should have 600 hosts at least. ये requirement है, business requirement है. So they are using Class B network, but they want to do subnetting. They want at least 50 subnets. Correct? Mm. Question is clear? Yes. उसको /16 भी बोला. /16 मतलब 16 bits fixed. When you say /16, instead of writing subnet mask, you Mm. can write just 16 /16. It's one and same thing. Yeah. Cloud may be following this convention. /1. हाँ. Okay. 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 That is called a CIDR notation, classless interdomain routing. CIDR. You can note it down if you want to. CIDR. ITR. In Uh, cloud, we are not using subnet mask, rather we are using this CIDR notation. okay. What it stands for? CIDR? Classless, classless interdomain routing. Classless interdomain routing. Okay. Got it now? Yeah.
So the question is same now. Now we are trying to solve this one first. कि नया subnet mask change हो जाएगा उसमें. What is the job of subnet mask, by the way? Subnet mask होता किसके लिए actually? What is the job of subnet mask? Why it is required? To know the fixed part and changing part. Very good. God bless you. Correct. Absolutely. Subnet mask will tell you what is fixed part and what is changing part. Yeah. For a given subnet, when you do subnetting, what happens? The fixed part will increase or decrease. Uh, Subnetting करने के बाद floor number भी आ गया ना? For given floor, right. what is same? What is constant? For a particular floor, what is constant? What is fixed? The floor number and building number. Very good, very good. तो फ्लोर नंबर एक्स्ट्रा आ गया ना तो अपना फिक्स पाथ थोड़ा बढ़ गया राइट Right. इसलिए सबनेट मास्क भी चेंज हो जाएगा क्योंकि सबनेट मास्क में वंस रिप्रेजेंट्स द फिक्स पार्ट जीरो रिप्रेजेंट्स द चेंजिंग पार्ट गेटिंग Mm-hmm. Yeah. or the ones will represent the fixed part and zeros will represent the changing part in subnet mask Mm-hmm. getting Yes. तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा वहां पर राइट Yes. ऑलराइट तो हमको अभी नया सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है 50 सबनेट्स के लिए तो अभी डेसिमल में तो इजी था 50 सबनेट्स 50 फ्लोर्स में 50 का आंकड़ा आ गया तो दो डिजिट लगते राइट अब ये Mm-hmm. बाइनरी सिस्टम हो गया ना बाइनरी में Yes. 50 सबनेट में 50 को अपने को क्या करना पड़ेगा वी हैव टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी एंड सी हाउ मेनी Yes. बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट नंबर 50 कैन यू डू दैट करके बताओ जरा मुझे Yes. Sure. 50 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखो एंड टेल मी हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड देयर आर यू फॉलोइंग ऑल द क्लासेस अभी लेयर्स भी मैंने सिखा दिया यू अंडरस्टूड द लेयर्स प्रॉपर्ली Yes. Yes, Manoj. हाँ सो दीज आर ऑल good topics. You have to keep Hmm. revising them. Yeah. Yeah. There's no shortcut. So what to do? You have to study Mm. everything. You know that how much efforts I'm taking to teach all that, right? Trying to teach in Yes, Manoj. simple way Yes. and all that. You Yes. have Yes. to I study agree. all that. Hmm. Yeah. Yeah. So for 50, the binary will be 0011, all zeros. Don't take zero zero. Just calculate 50 and tell me how many bits it is. Number 50 requires how many bits? Don't add zeros. Don't One, prefix two, with zeros. six. 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 Okay, very Yeah. good. So that means the value of x is 6. Getting? So we require 6 bits to represent number 50. It means that. Yeah, Mm-hmm. We require what? What you said? 6 bits, Okay. Okay. 6 bits to represent Hmm. The the number 50, right? yeah. So in that case, it will be like this. Just see solution like this. See, the default subnet mask is 25500, right? The new structure of the IP address would be like this, right? So 16 bits for the network part, 8 bits for the subnet part, and 16 bits for the host part, right? The value of x is what? How many bits we have to borrow? 6 bits, right? Hello. Mm-hmm. So how many remaining for the host? Yeah. 10. 10. Correct. Only 16 10 minus bits. 6. Correct. So what is the new subnet mask now? What is the constant part here? What is the fixed part? What is the changing part in the new design? How many The bits are net fixed and how many bits are changing? 16 network part is fixed here, Hmm. and host part, of course, is changing. The Hmm. subnet also changed. It will not change. For a given subnet, it will be same. No? For a given floor, these two will be same, right? The network part and subnet part will be same for a given floor. This much will be fixed.
अभी हमने देखा ना, बिल्डिंग नंबर फ्लोर नंबर सेम रहता है ना फॉर अ गिवन फ्लोर, राइट? हम्म हम्म. गॉट इट नाउ? Can you just scroll up a little bit? More up. और क्या देखना है? Okay. Okay. क्या फिक्स रहेगा? ये सबनेट पार्ट एंड नेटवर्क पार्ट मीन्स वेरी गुड, बिल्डिंग नंबर एंड फ्लोर नंबर. करेक्ट करेक्ट. सो टोटल हाउ मेनी बिट्स? 16 प्लस 6, हाउ मच इट इज? 22. यस. तो इसलिए अपना न्यू सबनेट मास्क में 22 वंस रहेंगे. सी, 22 वंस and 10 zeros हम्म because 10 bits are changing. Getting? हम्म. And that you convert to decimal. So it comes this. ये नया सबनेट मास्क हो गया आफ्टर कन्वर्टिंग टू डेसिमल. Okay. गॉट इट? कैसे नया Yeah. सबनेट मास्क आया? Yes. हैव यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली दिस मच? Yes. Understood. ये पहले करना है हमको. तो Okay. we should be able to design new subnet mask. That is the first step. Mm-hmm. समझा प्रॉपर्ली? Yes, समझा. स्लिप लिया आपने? ये ले लो. The company decides to. Hmm. सेकेंड पार्ट आई विल टीच यू लेटर. ये जो है ना और कैलकुलेट करना, ये थोड़ा बाद में सीखेंगे. Okay. पहले यहाँ फर्स्ट स्टेप, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू सबनेट मास्क. दैट इज फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू. Okay. Took it. डन. Yeah. देन ये कैलकुलेशन इसका यहाँ पर है ऐसे. सोल्यूशन Hmm. तो थोड़ा छोटा कर दो तो आपको दिखेंगे. दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस, फॉर कैलकुलेटिंग द न्यू सबनेट मास्क. इसका भी स्निप ले लो. जी. गेटिंग? Yes. तो इसके भी क्वेश्चंस देने हैं अभी तो. फाइंड द न्यू सबनेट मास्क. डू क्या करेंगे आप? Yes. तो और एक चीज ये है कि जस्ट लाइक इन द डेसिमल सिस्टम आई टोल्ड यू कि 50 फ्लोर्स के लिए 2 डिजिट हमने रिजर्व किया, राइट? Hmm. तो व्हेन यू रिजर्व 2 डिजिट्स, सो इट कैन गो अप टू हाउ मेनी फ्लोर्स? ऑफ कोर्स, राइट? 99. हाँ, हमारे पास अभी तो फिलहाल 50 फ्लोर्स है, बट वो आगे एक्सपेंड कर सकते हैं 99 तक, करेक्ट? Right. तो वैसे ही इसका भी है कि हमने 50 सबनेट्स के लिए डिजाइन किया, लेकिन इट कैन गो लिटिल हायर. Hmm. हाउ? द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स विल बी 2 to 6. 6 बिट्स है ना?
हम्म 64 रहेंगे, हमने डिजाइन 50 के लिए किया लेकिन 64 सबनेट्स हो जाएंगे। करेक्ट ठीक है, समझा? या दैट इज 0 to 63। हम्म Similarly, host per subnet will be 2 raised to 10 minus, because 10 bits बचे ना हर एक राइट सबनेट में। अभी पहले एक ही नेटवर्क था जिसमें 65,65536 होस्ट थे, इतने सारे होस्ट थे, राइट? राइट बट अभी सबनेटिंग किया, सबनेटिंग कितने में किया? 64 सबनेट्स बनाए हमने। हम्म और हर एक सबनेट में अभी कितने होस्ट आ सकते हैं? 2 raised to 10 minus 2, विच इज 1022। हम्म समझा क्या? यस छोटा छोटा नेटवर्क बन गया ना अभी। राइट राइट रिक्वायरमेंट था 600 के लिए, राइट? बट अभी हम्म 1022 1022। 1 यस 0 2 2। हम्म क्लियर? यस यस राइट? यस दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ तक का आना चाहिए अपने को। इसका भी स्निप ले लो नीचे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स। टेकन ठीक है, यस ओके ग्रेट। So I'm now giving you one exercise on WhatsApp. Just a second. ओके इसमें जो सेकंड पार्ट है ना वो करो। फाइंड द न्यू सबनेट मास्क फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क्स। तो तीन ओके क्वेश्चन दिए, वो आपको करना है। ठीक 1 2 3 ओके क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो पहले। ट्राई कर सकते हो? हाँ ट्राई। अ, ये मनोज अभी करना है हाँ करो ना, क्यों, क्या हुआ? नो एक्चुअली आई हैव टू रीच समवेयर एक्चुअली मुझे गाड़ी किसी के पास हैंड ओवर करनी है हम्म, तो आई हैव टू रीच देयर बाय बिफोर 4 इट्स 3:25 नाउ अच्छा, कैन आई ठीक है, कंसीडर दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क। यस यस एज अ होमवर्क ठीक है, करो होमवर्क करो, बट पहले की भी कंप्लीट करो, ये भी करो। हाँ हाँ श्योर ठीक ठीक है, है चलो, ओके, ऑल राइट। यस ओके सॉरी हाँ मनोज एंड सी एक्चुअली वन रिक्वेस्ट अगर ऐसे इंडिविजुअल के लिए आप क्लास ले रहे तो मुझे एक दिन पहले आप बता सकते हो प्लीज हाँ बताऊंगा, बताऊंगा। हाँ क्योंकि फिर मैं वो अपना जो स्लॉट रहेगा ना वो फिक्स करके रखूंगा यस I यस need यस to give importance for this. Sometimes यस। I'm planning something else. वो अगर क्लास बीच में आ रहा है तो मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो रहा है इसके लिए। ठीक है, एक्चुअली हमने 5 बजे का रखा ही था ना वैसे तो, लेकिन बीच में नहीं हुआ ना, तो ठीक है, यू आर ऑल्सो नॉट श्योर, करेक्ट। ठीक है, Yeah. फिक्स करेंगे, या विल बी फिक्सिंग इट। दैट्स So राइट, यू so राइट। so मॉर्निंग जो 8 AM आप बोल रहे हो हाँ, मैं और उनसे ये बात करता हूँ, करके फिक्स हाँ करता हूँ ये, लेकिन एक्सरसाइज करके रखो ना आप। हाँ श्योर श्योर ये करना जरूरी है जरा। ओके ओके ठीक है आप राइट, मुझे बस इन्फॉर्म कर देना नेक्स्ट क्लास कब रहेगा सो दैट आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली या अभी ये ठीक है सैटरडे का टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बिकॉज मॉर्निंग में मेरा एक फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है। तो ओके सैटरडे को आई विल बी पुटिंग ऑन द ग्रुप, ये 4 बजे का है करके। 4 o'clock आई एम गोइंग टू टेक श्योर सैटरडे। ओके 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 आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप। ठीक है चलिए दैट इज कल का जो क्लास है ना, ग्रुप क्लास, वो 4 बजे मैं लेता हूँ। फाइन फाइन Putting in the group because I have a family function which I have to attend. I cannot avoid that. That's the problem. Okay. No worries, no worries. Where do you stay in Pune? I stay near Koregaon Park. Koregaon Oh, Park. Puregarh Park. And your office is in? NIBM Chowk, near Jyoti Hotel. हाँ, I know. I was there ना in Pune. ज्योति वो स्लोप के एंड में है ना वहाँ पे एक ऊपर रास्ता जाता है चौक है ना, हाँ कोंड बराबर। करेक्ट। कोंडवा बुद्रुक. ज्योति I हाँ, remember. It's a veg restaurant, right? yes, very nice food. Yeah. Yes, I remember. Long back, 2012, I was there in Pune. Yeah, you come to Pune, we'll have idli together.
Sure, sure. I would like to. Sure, if ever I come, definitely I'll let you know. जरूर जरूर इडली खाने के लिए तो आ जाएंगे मुझे पता है बाकी Sure, sure. We'll share. ओके 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 सी यू गाइस बाय Okay, Manoj. Thank you. Thank you very much.